માનनीय आरोग्य मंत्री श्री प्रफुल्लभाई पानसरिया साहेबे गत शनिवारे जे सरप्राइज मुलाकात लीधी हती ए मुलाकातमां जे कंई अमने खामीओ के क्षतिओ जणाई हती ए बाबते एक बधा तमाम अधिकारीओने साथे मीटिंग करवामां आवी हती अने मीटिंगना अंते तमाम जे पीआईयूना अधिकारीओ उच्च अधिकारीओने पण एमणे सूचना आपी हती अने रविवारथी ज रजामां पण कामगीरी चालू करवाना स्पष्ट आदेश करवामां आव्या हता। जेने कारणे आप जोई शको छो कि रविवारे रजामां जे पेशंटनो लोड ओछो होय तो एनो लाभ लई अने अमे सफाई अभियानथी लईने पीआईयू सिविल द्वारा टाइल्स बदलवानो कामगीरी पण चालू करी दीधी हती। पीआईयू इलेक्ट्रिक द्वारा कोल्ड केबिनेटना रिपेरिंगनी कामगीरी पण हाथ धरवामां आवी हती तात्कालिक अने रविवारे सांज सुधीमां 4 केबिनेट चालू थई गई हती अने बीजी जे 4 केबिनेट जे चालू थई शके एम न होय एमणे नवी केबिनेटो मंगावी लीधी छे अने गईकाले रात्रे जे केरियर कंपनीनी केबिनेट आवी गई हती। अत्यारे हाल इन्स्टॉलेशननी कामगीरी चाले छे ए 2 થી 3 કલાકમાં કામગીરી પૂરી થશે। આ નવી કેબિનેટ અતિ આધુનિક છે અને જેમાં -6 ડિગ્રી સુધી ટેમ્પરેચર રહી શકે એમ છે અને એમાં એ કુલિંગ 90 દિવસ સુધી રહી શકે એમ છે એટલે ડેડ બોડી લાંબો સમય સુધી રાખી શકાય એ પ્રકારની કેબિનેટ અમને પ્રાપ્ત થઈ છે। માનનીય આરોગ્ય મંત્રી શ્રીનો આ બાબતે હું ખૂબ આભાર માનું છું કે દર્દીઓની સુવિધામાં એમણે ખૂબ પ્રયત્નશીલ છે અને અમને માર્ગદર્શન આપતા રહે છે અને આવનારા દિવસોમાં ઘણી બધી સુવિધાઓ વધી રહી છે એ આપને જણાવતો આનંદ અનુભવું છું।